So, good afternoon, students. So, today we are going to start the topic constraints in DBMS. This is the lecture 6 of DBMS. And what now we are going to discuss what is constraint. Constraint means क्या होता है restrictions. तो क्या होते हैं ये restrictions कहाँ पे? Actually, restrictions are imposed to the on the database constraints and operations. किस लिए restrictions? जैसे हमारे लाइफ में our parents our parents take some strict actions, or they say that you should not go to that place, this place. Why? For our safety, for our security. The same way, the same way, if we impose restrictions on the database contents and operations, they ensure the correctness. It is done to ensure the correctness of data in the database. Okay. होप आप लोगों को समझ में आ गया. रेस्ट्रिक्शंस होते ही इसलिए टू इंश्योर द करेक्टनेस. एग्जांपल ले लो. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे रोल नंबर. ओके. रोल नंबर में आप क्या न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे? यू ऑल नो. सपोज आप उसमें यदि रेस्ट्रिक्शंस नहीं दोगे न्यूमेरिक, तो क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? ए बी सी डी भी दे देंगे, पी क्यू आर भी दे देंगे, ए बी सी डी 1 2 3 4 भी दे देंगे, एनीथिंग दे कैन गिव. बट इफ यू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस लाइक, आप सोच लीजिए ओनली न्यूमेरिक न्यूमेरिक, तो फिर क्या होगा? वो न्यूमेरिक वैल्यू ही दे सकते हैं. तो वी हैव इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ना, दैट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज. सपोज नेम है, नेम में से ओनली कैरेक्टर, आई एम टेलिंग ओनली कैरेक्टर्स. तो क्या होगा? ओनली कैरेक्टर्स दे कैन पुट, बिकॉज नेम में कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होते. एनीबॉडीज नेम, कस्टमर नेम, स्टूडेंट नेम, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन उसमें नेम होते हैं. नो न्यूमेरिक वैल्यू इज इम्पोज ऑन दैट. तो फिर इस तरह के आप, फॉर दैट वी आर गोइंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस. रेस्ट्रिक्शंस नहीं देंगे तो फिर वट एवर द पब्लिक है, वट एवर पीपल कैन डू एनीथिंग ऑन इट, कुछ भी दे देंगे. एंड वी कैन नॉट फाइंड द, इफ वी डू नॉट पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नेम. सपोज एनीबडी हैज गिवन द न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पे दे दिए सपोज रोल नंबर में इसने दे दिए कैरेक्टर वैल्यू, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है. एंड दे है ये गलत है, सही है, कुछ भी नहीं समझ में आ गया. लेकिन इफ यू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शंस, तो हमें थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज हैपनिंग इन द डेटाबेस. अंडरस्टूड? तो कंस्ट्रेंट्स मीन्स क्या होगा? रेस्ट्रिक्शंस. Restrictions imposed on the database contents, on the database contents on the database contents and operations. किस लिए? Why? They ensure the correctness of data, the correctness of data in the database. Okay. There are 5 different types of relational constraints. There are 5 different types of relational constraints. Types relational constraints. कौन सा टाइप से? Number 1. Let's take number 1. Number 1 is domain constraint. Number 2, tuple uniqueness constraint. Tuple uniqueness constraint. Number 3, key constraint. Number 4, entity integrity constraint. Entity integrity constraint. Number 5, referential integrity constraint. These are all the things. Okay. इतनी सारे constraints हमें जानना पड़ेगा. First and the most important is domain constraint. Number 1 is domain constraint.
डोमेन कंस्ट्रेंट। अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं? ओके, एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। ओके, स्टूडेंट आईडी x001, x002, x003, x004, ऐसे कुछ है। ओके, राज, आयुषी, देन अक्षय, देन राहुल। इतने सारे हैं। ठीक है, एक एज दे दिया मैंने 20, 21, 23, और यहाँ पे मैंने ए दे दिया। सपोज आई हैव गिवन ए। अब एज ए तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स देयर इज सम इशू हियर। एज तो ए नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या होगा? दिस इज नॉट अलाउड, दिस ए इज नॉट अलाउड। हम यदि डोमेन कंस्ट्रेंट दे देंगे तो देन ए इज नॉट अलाउड। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो डोमेन कंस्ट्रेंट में क्या होता है? जैसे एज इज न्यूमेरिक, तो यू कैन नॉट पुट ए अल्फाबेट ओवर हियर। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डोमेन कंस्ट्रेंट मींस आप एक कंस्ट्रेंट दे दिया, यू हैव गिवन ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज, डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज, और उसी वैल्यू से उसको लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एक्चुअली domain constraint defines the domain or set of values for an attribute. अब आप लोगों को क्लियर हो गया। It specifies that the value taken by the attribute if value taken by the attribute must be the atomic values from must be the atomic values from its domain. Okay, it should be atomic value, okay, from its domain. Hope आप लोग clear हो गए। Now we are going to discuss about tuple uniqueness constraint. Number 2 is tuple uniqueness constraint. Tuple uniqueness constraint, इसमें क्या बोलते हैं? It specifies that all the tuples must be unique in any relation. Must be unique in any relation. मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट नहीं चाहिए। डुप्लीकेट रोज आर नॉट अलाउड। सिंपल, डुप्लीकेट रोज आर नॉट अलाउड। जैसे एग्जांपल ले लो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। तो यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय आईडी दे दो E001, E001, E002, E003। यहाँ पे राज कर दो, राज, ऋषि, आयुषी।
Okay, salary 20,000, 20,000, 50,000, 70,000. अब कैन यू सी दैट ये जो है ये टपल ये जो रो है ये रो these are not unique, they are duplicates, so this is not allowed, this is not allowed. तो क्या what is allowed? Actually it should be E001 राज 20,000 को 20 के कर दो, ठीक है। उसके बाद E002 ऋषि 50 के, E003 आयुषी 70 के, इस तरह का होना चाहिए, दिस इज अलाउड। बट देयर इज एवरीथिंग इज यूनिक, कैन यू सी this tuple is this row is unique, this row is unique, this row is all the rows are unique. This is what the tuple uniqueness constant is saying, wants to convey. होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड है की कंस्टेंट। थर्ड इज की कंस्टेंट। अब व्हाट इज की कंस्टेंट? की कंस्टेंट मीन्स क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी की, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की, टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑल द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑल द वैल्यूज, all the values of primary key must be unique. Number two, the value of primary key, the value of primary key must not be null, must not be null. This is what it is saying. जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल डुप्लीकेट है, यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट, यहाँ पे भी डुप्लीकेट, ये नहीं अलाउड है। इफ इट इज लाइक दिस, तो दिस इज व्हाट इट द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग, ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी। देखो यहाँ पे E001 है, यहाँ पे E002, यहाँ E003, तो ऑल आर यूनिक, तो दिस इज अलाउड। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी लेस, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता, ठीक है, इट शुड नॉट बी नल, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। नाउ fourth is entity integrity constraint. Entity integrity constraint. अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? एंटिटी इंटीग्रिटी कंटेंट स्पेसिफाइज दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की मस्ट कंटेन नल वैल्यू इन एनी रिलेशन। कोई भी रिलेशन में इट्स नॉट हैव ए नल वैल्यू, ओके। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नल वैल्यू इन द प्राइमरी की वायलेट्स द यूनिकनेस प्रॉपर्टी। नल वैल्यू यदि रहेगा तो फिर क्या होगा? यूनिकनेस प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा, तो उसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। लेट मी राइट दिस थिंग, स्पेसिफाइज that no attribute of primary key must contain a null value, must contain a null value in any relation. उसके बाद this is because the presence of null value, the presence of null value, this is because the presence of null value in the primary key violates the uniqueness property, violates the uniqueness property, uniqueness property, okay.
तो दैट्स वाई null वैल्यू अलाउड ही नहीं है. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. इसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. कीप इन माइंड. फिफ्थ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. अभी रेफरेंशियल मीन्स क्या है? ये वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन की. ओके, फॉरेन की. तो रेफरेंशियल मतलब क्या? कहीं प्राइमरी की है, कोई एक टेबल में प्राइमरी की है, उसको जब हम दूसरे टेबल के साथ रिलेट करते हैं तो इट एक्ट्स एज अ फॉरेन की. दैट इज अ फॉरेन की. अंडरस्टूड? जैसे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, इफ ही गोज टू द अदर कंट्री तो वो उस कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है. या ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है, तो उस कंट्री क्या है? वो फॉरेन का मिनिस्टर आया हुआ, फॉरेन का मिनिस्टर. ओके, फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है. Okay, he is not the prime minister of any other country. He is the prime minister of India. तो क्या होता है? दूसरे कंट्री में जाएंगे तो फॉरेन की है. He has no powers. यहाँ पे जैसे पावर्स इंप्लीमेंट कर सकता है. ओके, he can bring ordinance and so many things. ठीक है, वहाँ पे वो सब चीज़ें वो नहीं कर सकता है. He visits to for business activities. ठीक है, he can bring business to our country. ठीक है, तो इसीलिए रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सब चीज़ें वो करते हैं. लेकिन वहाँ पे वो कोई और अपनी, if he wants to implement anything, he cannot implement in any other country. He can implement in his own country. This is what foreign key is. Hope आप लोग को समझ में आ गया है. अब this constraint is enforced. ये रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? This constraint is imposed. This constraint is imposed when a foreign key references, when a foreign key references the primary key of relationship. The primary key of a relation. Next, it specifies that all the values. It specifies that all the values taken by the foreign key must either be available in the relation of the primary key PK means primary key, or be null. Let me explain this. It specifies that all the values taken by the foreign key must either be available in the relation of the primary key. होगा वैल्यू, फॉरेन की का वैल्यू होंगे, या इट कैन बी नल. फॉरेन की में नल हो सकते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. स्टूडेंट, लेट मी टेक ए स्टूडेंट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल. स्टूडेंट एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. स्टूडेंट एक टेबल ले लीजिए. स्टूडेंट में क्या क्या होगा? रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर. ओके, और एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं टेबल. डिपार्टमेंट, इसमें क्या होगा? डिपार्टमेंट नंबर, और एक ले लेंगे डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, ये दो टेबल है. अब एग्जांपल, लेट मी टेक एग्जांपल. ये जो है, कैन यू सी दिस वन इज द फॉरेन की. ओके,
अब let me take the student table break, let me make a table student। और उसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर ले लो, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर। रोल नंबर ले लो S0011, S023, S025 ऐसे करके है। सुशांत, विक्रम, देवव्रत। ओके, डिपार्टमेंट नंबर ले लो D01, D02, D03। एक और ले लो S027, आयुषी, D19। ओके, नाउ लेट मी टेक द डिपार्टमेंट टेबल। उसमें क्या, डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नंबर ले लो D01, D02, D03, D01, D02, D03 छोड़ दो, D19। लेट मी टेल यू द सिचुएशन। ओके, डिपार्टमेंट नेम ले लो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। देखो अब क्या है, ये देखो, इट डज नॉट सेटिस्फाई द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। हाउ कैन यू सी दैट, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है D19, दिस इज नॉट डिफाइंड ओवर हियर। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, D01 है, D02, D13 है, लेकिन D19 डिफाइन नहीं है। तो क्या है, इट वायलेट्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे क्या बोला, एल द वेज टेकन बाय द फंड की मस्ट इधर भी अवेलेबल। मस्ट इधर भी अवेलेबल मतलब क्या है, D01, D02, D13। ठीक है, डी एक मिनट, D13 ने D03, सॉरी, D03 अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सपोज नल कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन D19 यहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स दैट इज एन इशू। तो इट वायलेट्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। होप आप लोग क्लियर हो गया। ओके, अब इस वायलेशन, दिस वायलेट्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, ये सारी चीजें आप लोग टॉपिक्स करेंगे। और नेक्स्ट वी आर कमिंग विथ द कीज, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट की, उसके बाद सुपर की। कैंडिडेट की से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की लेते हैं, तो दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। सुपर की से हम प्राइमरी की कैंडिडेट की कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।